Hello everyone. I hope you all are fine, healthy, happy, safe, and doing very well. So, just want to share some thoughts जो आ रहे माइंड में. So, there will be some situations, of course, life है. Problems will be definitely there, right? Without problems, life won't be there. Also, problem plus good things also. So, now, some situations will be there. It can be for anyone, like students or also for adults, anyone जो भी जिंदा है जी रहे लाइफ. सो ना बहुत हर एक फेस में अलग अलग होगा बहुत कुछ. आई डोंट नो मेनी फैक्टर्स, बट जितना तक मुझे एक्सपीरियंस है मैं उतना बता रही हूँ कि खुद ना सिचुएशंस को डील करना पड़ेगा बहुत बार. ऑफ कोर्स मैक्सिमम टाइम खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन, right? So if we are right in that situation now, so we have to take stand for our own self before like depending on others to speak for ourselves. खुद के लिए ना पहले खुद हमें बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही चाहिए. अगर हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो सामने इन फ्रंट इफ एनी पर्सन विल बी देयर ना, whether that person can be big or small or anything, okay, whether that person is your family member or other person xyz, okay, you can keep any person xyz in front of you. But if you are right, okay, and if you are genuinely right, then you have to take stand for your own self. That is not at all wrong, okay. And of course God help those who help themselves. तो पहले खुद का ही नहीं लेंगे ना स्टैंड, तो दूसरे क्यों ही फिर स्टैंड लेंगे लाइक आपके लिए, राइट है ना. सो वही, सो नो मैटर वॉट सामने क्या है, क्या बोल रहे हैं, कभी कभी मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. सामने वाला पर्सन कैन ऑल्सो मैनिपुलेट यू, ओके, और दे कैन डिस्प्ले समथिंग लाइक दैट दे विल प्रूव दैट यू आर रॉन्ग. बट इफ़ यू नो, then you should have that guts in yourself to speak for your own self that no, I have not done anything like this. If you are thinking like this, then you can take a action or call some person. अगर आपको पता है कि कुछ किया ही नहीं आपने, तो फिर क्यों ही है ना पीछे हटे, राइट. So you have to speak for your own self. No other person will speak for yourself. No one will speak, because everyone has to save themselves, right? So वही. एंड इवन इन फैमिली भी होगा सिचुएशन कभी ना ऐसा कि समटाइम इमोशनल ब्लैकमेल मे बी मीन्स आई एम जस्ट टेलिंग ओके दैट वे, जस्ट टेक इन कैजुअल वे ऐसा करे. तो जस्ट सी द रियलिटी एज इट इज़. इफ़ यू आर थिंकिंग ना, देन राइट इट डाउन इन द पेपर एंड ऑल, मेक इट क्लियर वॉट यू वॉन्ट टू स्पीक एंड ऑल. So clarity if you have, and you know that what is right and what is wrong. You can also be wrong sometime, of course, right? Like it is not that everyone is always right. You can also be wrong sometime, है ना. So at that situation when you are wrong, just accept that okay, I was wrong, I understand your way, my way was wrong, okay, I got it. But now if you are right, then you also have to speak for yourself. Accept when it is wrong and stand for yourself when you are right. That's it. And why I'm saying this, because if you won't stand for your own self, then like other person can blame you, they can play with you. And there will be some peoples who are your well wisher, okay, तो वो तुम्हारा ना अच्छा ही चाहेंगे, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो. एंड फिर बेस्ड ऑन दैट लाइक यू कैन टेक योर डिसीजंस. दैट्स द ऑल्सो थिंग. बट कुछ बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, then the other person will think that okay, he she don't have any courage to speak for themselves. Then they can continuously they will try to find many n numbers of reason for torturing you, okay. So that's the main reason. So we have to speak for our own self. Thanks.